Hello, assalamu alaikum. Welcome to another live stream series. So last episode में हम लोगों ने डिज़ाइन को हाफ द डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था, बट मेरा अभी भी जो पर्सनल लेवल पे ना वो दिल नहीं भर रहा कि जो मैंने बनाया है वो इज़ अ रीवैम्प वर्जन ऑफ द ओल्डर वेबसाइट, बट उसमें कुछ नया ठीक है, कलर्स हैं, थोड़े डिज़ाइन हैं, साइकोलॉजी ऐड हो गई, लेकिन ना वो वाइब नहीं आ रही, मतलब जो मुझे ख़ुद को सेटिस्फाई करे। तो दैट इज़ द थिंग। तो वी विल बी डाइविंग इन, और मे बी आज मैं एलिमेंटर प्रो को भी थोड़ा सा टच करूं to actually get new things on board. And I'm sharing the live stream to our WhatsApp community. Let me share, if I could share the link. No, I can't do it right now. Okay. Um, I'm sharing it to the WhatsApp community. The link is given in the description. You guys can click over and join our WhatsApp community. And प्लीज़ बी एक्टिव हेयर, आएँ गपशप लगाएं, बात करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो साथ साथ मुझे बताएं कि आप किधर से हैं और क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर करंट प्रोफेशन। गपशप लगाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। एंड yep, the live chat is in front of me, everything is all set, and there you go. Okay, so the stream is going to be a bit long, so be careful who is watching this. So if you wanna sit with me, मज़ा आएगा, नहीं आना बैठना तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो where is the design that we created? Yeah, this is the design that we were creating. We will create it with Elementor. So we are revamping the website. This is the client website older version, and we have to create a better version for it. So far it's not too much different, a bit of tweaks and nothing more. If I personally ask myself, is this what client will pay you $5,000 to for it? Never. I don't think so. If I self don't trust her, so why a client do pay me for it, right? Even though there is a lot of pain in there, but still, I think I'm not still there. That I need to do some major tweaks, or I have to bring on something. So Theme Forest was a website I was following, but I got to know about Envato Elements. पता था इसके बारे में भी, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसके लिए ठीक नहीं होगी। बेसिक से थीम्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं बनेगी। बट आई एम लिटरली शॉक्ड टू सी एक्चुअली कि नहीं, basically Envato elements have a more better impactful design rather than what we were creating, और ये ज़्यादा बेहतर है उससे। तो अगर हम यहाँ से डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेते हैं तो हम वी कैन आउट परफॉर्म एक्चुअली द client design, and we can create something really creative today. So I will be sitting with you for a long hour now. We will take azan breaks, and we will be doing long live stream today. Yeah. सो कंपनीज आई हैव सर्व्ड की जगह इसको हम क्लाइंट्स कर देते हैं, बिकॉज ये इसके क्लाइंट्स हैं, सारे क्लाइंट के जिनको इसने सर्व किया हुआ है। यहाँ पर इसके जो कॉलम्स हैं वो 8 है, इसको हम 10 कॉलम्स कर देंगे। बिल्कुल ही चुनने से छोटे छोटे से ब्रांड्स जिनके साथ ये काम कर चुका है। और उसके अलावा इस कंटेनर को स्पेसिफिक को पकड़ के उसकी जो विड्थ है उसको हम बिल्कुल शॉर्टन कर देंगे जितनी उसकी ज़रूरत है, बस दैट्स इट। बाकी उसके क्लाइंट्स यहाँ पे पूरी लिस्ट में आ जाएंगे। तो या ये दैट्स मोस्ट ऑफ इट। बट मुझे जो यहाँ से डिज़ाइन इंस्पो मिला है ना अभी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से your journey, discover the true potential and live your best life. This is something very good title or good design being made. Let me see if I can add custom CSS in simple. Oh, it's a pro plan, right? So yeah, I have the nulled version of Elementor Pro. Let me add it first. So I think I have to do one step higher today to do more for a client. And um, adding Elementor Pro, I can give you the file as well if you want it. Just join our WhatsApp community. The link is given in our description box.
just click over there and you can join all from there, and drop a comment over there, I need Elementor Pro. I will drop the file there so you guys can use it for your purposes. So come to plugins and add new plugin. And come over here and upload plugin and choose file. So there is already Elementor Pro file I saw here. Elementor Pro is here. It should be a zip file, not unzip version. Okay. So this is some older version for the WordPress that we'll be using, not the latest one. Yeah. So let it installed, until the time let's see what tweaks we need to do. Adding image in the background could work, but if I do it like this, a simple background, white background, nothing more on it, a simple author picture, the speaker picture, our short story, and get started button and a video preview button is something that is more gonna work for this kind of coach, rather than putting the image in background. Keeping it super simple, I think that's gonna work bit more. Okay, the plugin is there. Let's install it and let's see if we could get more designs. If you want to be a creative developer, don't be dependent on like one design. Look for more what others are doing. You may find good. Okay, trusted by which company? 5k plus companies. Now this is amazing. So if I'm putting simply the client setting over there, that's not interesting. This one is more of interesting thing that I saw. So yeah, this is how you take inspirations. Use AI, use your research, and go boom, make it happen. So let's make it 2 pages. First of all, I need to go to Elementor because I have the Elementor version. I go to settings. I need to make sure this setting is untick over here, and yeah, settings license is not valid. That's for sure. So license switch account. So you want to switch by different license. Want to deactivate my license for any reason? Oh, it's already connected, but whenever it will trigger an update, it will be removed from here right away. Okay, so I will simply go to here setting. I'm looking for a setting to integration. No, nothing required over here. Advanced switch method disable, enable unfiltered. Nope. Google Fonts enable. Google Font loads web. Font awesome support. Yes, that's it. Go to performance external blah blah blah. Okay, features, optimize markup, load Google Fonts locally. Okay, it's good. Landing pages depreciated. Okay, elements caching, blah 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 blah. Okay, usage data tracking. Yeah, make sure this is untick. Make sure this is untick, man. Okay, okay. So we'll go to simple user site. Not this page, our JC. So page post pages. Go to Elementor, customer service Elementor page. So John Tassol is trusted by 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, trusted by 20 plus companies. Let's make it this way. So trusted by 20 plus companies, trusted by 20 plus companies. So yeah, like this. The width is too small for it, so I will select the whole container from here
and make the width a bit wider for it. Yes, like this. This is gonna work. We make it to 15 like this. Yes, right there. And increase the line height. Not min height. Go to typography for the text and go over here and increase the line height. There you go. So this is something that's gonna work, and make it to medium to semi bold for it. So yeah, this is now a bit more highlighting over here. Yes, there you go. Mm-hmm. Okay, so I select the whole container over here and make the alignment to left. Keep it to start, and I go to advanced and uh, position not fix, size to grow like this. And let me do some magic to it if this works on this. So I select the marquee code from here, from this website. I will give you the code as well in the description after the live stream if this really worked for me. I select the whole container and I go to custom CSS. No, not custom CSS. I go to Z-index class CSS ID. So I put it to marquee. Yeah, marquee, and I now select dot marquee and dot group. So is it dot marquee? No, it's simple marquee. I make it to dot marquee. It's double dotted now. Yeah, it's already a dot marquee. Yes, already a dot marquee. I now select this container specific one. Oh, I made something bad over here. I have to just select it, just put it over here like this. What's going upside? It should be on in a single row. Let me see. I select this container over here and make it to row format like this. Now there you go. And the width should be like, no, I need to recreate this one. I need to create a row over here like this. I need to select a text heading like this. And sorry, again made a mistake over here. Let's undo everything again. If I will do, no, 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 no. Need to duplicate the container over here, and damn it. Oops, it worked. Wonderful. I need to create another container over here. Make it flexbox. Keep it to the row format like this, and I select a container in here. Select the container. Now select container to write in the row format. Make it to start like this. Copy this one, paste it here. Copy this one, paste it here. So this one have some issues. Let me see what it is doing actually. The content width. Just make it to this maximum. Yeah, right there. 84 to 85, right there. And select the whole container and align the content to center aligned. Select this one as well and align the content to center, so it will become the center part of the whole scenario. Now I select it and make it to add the CSS class. Go to CSS class and make it to dot marquee. Select the code, get the CSS code, select, so CSS, add your custom class like this. Okay, I was just following a video to learn how to install done.
So let me cross verify where to add this code actually. So let me cross verify. Oh, CSS classes. We have to add in CSS class. Just I was making sure to I'm adding it in the right place. So I select the whole container and selected more dot marquee, and then I select this one single container over here, and now I go over here and I select this one dot marquee group like this, and go to um, CSS classes over in the inner container now, and put it over here like this, and now I have to copy the whole code. I need to cross verify where exactly. Hello, hi Irzi, welcome. Good to see you back again, Irzi. कहाँ गायब हो गए थे आप? Where you have vanished yesterday? So I didn't find you after that. Okay, copy the whole code and go to. Oh yeah, I have to select the whole container. I was just verifying this. So I select the whole code from here and go to the container and go to advanced and go to custom CSS. Now I have the Elementor Pro, so I can put that whole code in down here, and let's see if that works. No, this really didn't work. Okay. Oh man, damn it. So I make it to full width. No man, life shit. It really didn't work. Okay, I will learn this and so I can master it actually. I want to make it to, a sliding text over here, but it didn't work that way I was expecting it to. Okay, no worries with that. No worries with that really. If it doesn't work, let me cross verify where I did wrong. Oh, he first duplicated it, then he put that code. Okay, okay. So if I just remove the code from here like this, he duplicated that thing, and one more thing he did, he put this to grow, and he also put this to center and grow, and he maybe does this to the inner side, not the outer side. Yes, inner side he made it to grow like this, and same like for this one made it to grow, not the upper one. I'll just unmark it over here like this, and now I select the inner column and go to custom CSS, and now put the code on it. Let's see. Oops, nothing worked. Okay, I select the container, go to advanced custom CSS and put the element to this one. No, it doesn't work the way I was expecting it to be. I will keep it to this one, the older design that we have already created. Yes.
We keep it to this one. Okay, so this is good. Top expert leaders, top expert leaders in customer service strategy and training. Okay, I take the inspiration from this one. So this is something more inspiring than this one, I think so. I've been removing these links. Okay, discover life coach. It's sounding hard actually to have to do everything from a basic again. I did a lot of work on it and I have to close everything. Damn. Shit. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Okay, let's make it this way. I will create another container over here and put the design over here like this. So first of all I have to create one container, then the other one. So I have to create this container like this. I have to bring a container over here like this. I have to duplicate this first so it can go down there like this, and within this I have to put another container or maybe a grid inside. Not in this one, in the downward one I have to put this container. Inside the container I have to duplicate it, but now I have to what I have to do is I have to select the inner second container and make it to the alignment, make the alignment to right in the row format like this. So I will get my design what exactly it is made on like this. And when you have the mentality that I have to sell, I have to make it happen, so you cannot, you will do it and you do it anyway. This is passion, and at work you need passion. Yeah. Wonderful. This is a truly best energy that I got right now, and I will copy this one from here, the whole heading thing. I will pump and paste it over here, and I will select it. Let me just make the line height as well for it. Select this whole thing and select the min height, increase it a bit as needed. 395, maybe 400. Where's my charger? Damn. Here it is. Okay, so here is my title. Let's make it to something dark. What client has already did for himself, or somebody maybe did it for him. Let's make it bit dark for it. Keep the color codes as it is, but make it bit darker, so it's easy to read and it attracts and give you some positive energy. So what exactly you're seeing than the normal. Just keep it to somewhere there. Not too much dark, not too much light, something charcoal vibe. Right there. Makes sense. So there, and I go to loop grid, loop carousel, off canvas. We'll explore these by the time goes, but I have to get something unique right now. Animated headline, yes, this one I was looking for, like this. So this is a circle, curly, and I want to put an underline like this. And top expert leaders. So Elementor Pro gives you such features to so the leaders in customer service strategy and training. So reset this.
So I've just changed the text from top leaders in customer service strategy and training, and that there's a dot and in the end. I'll just copy the text from here. Make sure there is no extra spacing in the text. Copy this, go over here and content. So before text on amazing को highlight किया हुआ है. So customer service and strategy and training, control X this one and highlight this one like this. And I'm gonna delete this one from here. I select this and infinite loop duration 1200 milliseconds. Infinite loop बंद कर देते हैं, सिर्फ one time आए, ठीक है, like this. And go to style and the shape color to maybe this headline. So headline color and animated text. So animated text is a bit gray, but I want to make the text color to be what it is. So I have to just bit of undo this thing because I have lost the color code that I did. So I select this and make it to global. No, I select this color plus and new heading color. अजान हो रही है, मैं ज़रा चुप रहूँगा. There you go. Now I have my headline like this, but I don't want to keep it to this color. I want to make it a bit lighter, so I will make it to gray maybe. Not like this. Text gray color. Maybe this, or maybe not. Maybe to this color. Yeah, this is something the suiting the design, right? And bring it to front. It's in the background of the text. So if I bring it to, it will overlap the whole text. So rounded edges, I don't think so. And I want to create a gap between the headline and maybe it doesn't support this. So duration है, animated text है, so highlighted text है, और इसके बाद का भी हम टेक्स्ट कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी एंड ट्रेनिंग जो है वो एंड ट्रेनिंग हम अलहदा भी कर सकते हैं यहाँ से. स्ट्रेटजी एंड ट्रेनिंग, नो इट वाज एज इट इज़ गुड. कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी एंड ट्रेनिंग, इट वाज गुड लाइक दिस. विल कीप इट टू दिस and I go to style, go to headline, and there is nothing like, oh, here it is, alignments. So I select the whole thing from here and keep the alignment to center. To the line height, we set the min height and it will auto adjust it to the center like this. From this to creating it to this, so this sounds better. Yeah, bit new, it gives a vibe basically, right? And
create a headline over here. I will just duplicate this one and underline zigzag. I make it to diagonal. No, strike through is will make a crossing over it. X, no, curly, nothing like that. No circle. I don't want it to be like this. Nothing needed. So I don't want it to be heading like this. I want it to be a simple heading over here with a simple underline under it. So embrace your experience, customer experience. Top leaders in customer service strategy and training, like this. So this is something gonna actually work better than what I was thinking of. And okay, so like this. Yeah, this so this is now giving the actually vibe. Now this is giving you the energy that you actually created something. So yeah, this looks more professional than what I was trying to create before and all blah 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 design thing. That was just crap. I feel that I did in the past few days, two live streams with you guys, and I put an image over here. So let's make the image a bit, so I have to put a PNG image of John Tassol that I did over here. I copy the John Tassol image from here. I come over here and paste it like this, the John Tassol. But I select the background. I don't think, I'm not sure it has a background or it's a PNG format image. Let me cross verify this, and I come over here on the background and put a color to it. Oh, it's not background. It's not really PNG thing. So I select to the accent color and make it gradient, and select the other color to white like that, and reverse the angle from down to the down like this. Make the white to transparent and put the white more than the green thing. Select the green color and make it bit transparent like there. Select this one, go to advanced and break the paddings over here, and I made to this like that. Okay, so now there's a content in here, so the whole scenario just actually changed. And let me change the background highlight color. We need to highlight the background actually. It's too much light. And make the angle maybe to like this. So I made it to this like that. Just in case, let's test it out. देखते हैं क्या होता है. ज़रूरी तो नहीं कि यही रखना है. बट उसने बिल्कुल नीचे रख के ना उसका कलर रखा हुआ है, तो उसका मैं एंगल राइट रोटेट क्यों कर रहा हूँ. उसका एंगल जो है वही, इसको मैं नीचे तरफ, और इसका जो कलर है ना उसको थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे. अब हर चीज़ कस्टमर उसकी कॉपी नहीं करनी कि उसने अगर कोई गलतियाँ की हुई हैं तो उसको ठीक नहीं करना जी, उसके ही कलर्स में करके देना सब कुछ, ऐसा भी नहीं है.
क्लाइंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्लाइंट ने कहा भाई शो मी योर वर्क, व्हाट यू कैन डू फॉर मी. So I make this a bit longer to line height to this. So now it's looking like this. Top leaders in customer service and strategy. And select the whole container over here and padding to 0. So the spaces over here between the two containers could hide over there. But let's keep a padding of 2. Yeah, so I can actually see the difference between, basically. So I make it to just 2 or maybe 5 from the top, so I can actually select what, or if I can't, I can select the navigator as well. So the option is there for me. Okay, so I select the parent container. There's a spacer in there. Oh, I got too much downside. I select the heading, and there is another container that contains other containers. So I click over it and not like that, I have to just click one time over it, and yeah, it will select the container, right? So it's a parent container, and it will have the second, you know mini container. I will double click, so this is the mini one. Another other container, that's also the mini one. So I have to name it very carefully while doing this thing. Now what I'm creating is really worthwhile, I feel so. So there is our short story heading. So you just copy this one from here, paste it down here, make the alignment to downward for this. So the content we put, it should come in the column format rather in the row thing, right? Our short story. So I have to just select it and make it to center aligned, because I want the content to be in center. The width is already there. So our short story, our short story, our customer experience, I will select it from here, make the alignment to left, and typography and go to secondary. The secondary one is too high, I make it to undo. The undo one is more better. The default one is more better than what I did with my website. So I can reset those site setting again once I got the exact designs for my headings. So this is an S2 heading. So yeah, this will work fine. Our short story, there's a paragraph underneath. So I will select, drag it down in there like that. Go to style and go to typography and make it to textile, and it's 22. Let's drop it to maybe 18. Roboto is the style. Let me see another website. I'm not sure it will give me the font out of the image. I really don't think so. Polysense. Oh, it gives. Oh, really? Amazing. So where it is, left tick. The font style over here is better than what I'm trying to use. So it's Polysense font. So I will go over here and select the headlines and make it to Polysense. Roboto is the default one, but I have to update it to Polysense now. Polysense, not Poly. No, Polysense is not a free font by Google. Okay. No. Not AR1. Let's search for Sans fonts.
Damn it. Let's see what does actors say. No top leaders. Okay. Do you guys think this is a good font comparing to this one or this one? Between looks good. I don't know, but it's giving a vibe that maybe it's a good one. So why not duplicate this one and see other fonts if they are a better option. So finding a good font is also a good struggle thing, I would say. I also got a website today from another one. There's some other speaker, but the website I really liked today, so I keep it as an inspiration. So I have to maybe create for somebody or maybe copy some part of his design in my design to create actually a better design for the client now. Now the thing I believe that thing that is I'm creating now is far better than the facilitate mindset. So the font style over here is truly awesome. So it's Montserrat. So he's using, okay. I select it, go to style, headline, and typography, and I selected to Montserrat. Between the best practice is to use the default fonts rather than going for a new fonts like this one, because um, they will have a lesser load time over the website, right? So that will eventually affect your customer experience as well. So yeah, this one looks more better Montserrat than this one. So I will delete the whole thing from here. Montserrat is a way better font with the combination of Roboto font. I make it to Accent style. Yep, Accent style is working far better, and make it to maybe 20. Ambitious customer experience, top leader in customer service and strategy. Yep. So whoever actually lands on this now homepage and this page appears up, so now this gives a actual vibe that you are interacting to some customer strategy training website. This is better. मजा आ गया. So I make it to 22. Yep, 22 is best, and same like that. This one selected to Roboto. We will make a combination of Roboto and Montserrat over here. Make it to 22. Yes, there you go. And we'll keep the style to this one as well, to Roboto, but that is by default. Our short story. Now there is a paragraph around it, so I will just in case, in today's fearlessly competitive, I just copy this whole thing from here that he have added and put it to here like this, and go over here and I'll make it to downside like that, maybe. It should be in one paragraph and should be small. That will work more than going it like that. So I will make it to maybe 17. Like that, and I will make it the make the color to maybe text gray. Yes, right there.
So it's diminishing the actually the activeness that this color was actually giving. तो आंखों को भी नहीं पड़ रहा ना वो, तो वो उसकी वजह से भी एक है ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है. तो I put the navigation around wherever it's needed. Okay, so I select this and remove the paddings from the top. I keep it to there like that. I select the whole thing, whole parent container over here. I have to select the parent container. Now I'm selecting the inner container over here, because I have to create a gap, a little gap in between over here. It's too close maybe. To create that gap, oops, what's happening? My system is getting hot. No, not really. It's getting, but not too much. Okay, so I have to put a button over down here, or I have to drag it a bit above, so the gap between here is too much, the white area here is too much. I have to reduce this anyway. So I have to put a button down here. So yeah, there is two buttons. So one is John Tassol seminars. I copy this button from here, bring this to here and paste it like this, remove all the spaces to this like that. Okay, so to achieving a two button thing over here, I have to add another container in here, right? So what I have to do is I will select another container, select this container. Now this is again a parent one, so I will go to navigator. So column 1, call 1, right? Okay, no, this is the parent one, because ऊपर वाले में क्या था कि इसको मैंने ऑलरेडी डाउनवर्ड की तरफ किया हुआ है. अब जब मैं इसके अंदर कंटेंट डालूंगा और जब मैं उसको डुप्लीकेट करूंगा या कॉलम डुप्लीकेट करूंगा, वो नीचे की तरफ डुप्लीकेट हो जाएगा, वो इस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है. तो ये पेरेंट है, तो मुझे पेरेंट के अंदर ये दो कंटेनर डालने होंगे या ग्रिड डालना होगा कुछ, तो मुझे कंटेनर डाल रहा हूँ मैं, ठीक है. थोड़ा कम्प्लेक्स डिज़ाइन है, बट यू गाइस गोना लव व्हाट्स बीइंग क्रिएटेड इन हियर. So I will select the parent thing. Ashar, if you're watching this video as well, you asked me this कि फिलहाल भी ऐसे कंटेनर नहीं जाते, ये देखो जा रहे हैं ब्रो, ठीक है. तो I will select this and make it duplicate. Now it's going here. So I select this parent one and this is the child one. So column 1 and column 2. Column 1 like this, ठीक है. आई सेलेक्ट द होल कंटेनर बटन थिंग, बिकॉज यहाँ पे स्पेसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, तो पेरेंट वाले को सेलेक्ट करके उसकी पैडिंग ब्रेक कर दो, और इसी तरह इनर वाले की भी जो है इसकी पैडिंग्स को सेलेक्ट करके इसको ब्रेक कर दो, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर आके भी इसको ब्रेक कर दो ऐसे करके, ठीक है. और इसको फिर सेलेक्ट करके इसके अंदर बटन लगा के आपकी जो विड्थ हैं वो पेरेंट को सेलेक्ट करके करना. पेरेंट्स को सेलेक्ट करो और लेआउट में जाओगे, और लेआउट में जाकर यहाँ पर जो इसका गैप है ना, अगर आप चाहते हो कि इस दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल पास पास आ जाए, तो इसको ब्रेक कर दो और ये बिल्कुल आपस में साथ जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है. तो मैं इसको कॉलम, ऐसे रोज़ होती हैं कॉलम लेवल के ऊपर, मुझे इसके अंदर दरमियान में 10 की स्पेस चाहिए, तो ऐसे 10 का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, छोटा सा माइनर सा स्पेस दोनों के दरमियान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. तो यप, राइट देयर. नाउ ड्रैग दिस बटन एंड पुट इट इनसाइड, ठीक है. तो ये कुछ ऐसे बनेगा जॉइंट सॉल्व सेमिनार. तो सेमिनार का जो बटन है उसकी पैडिंग्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो ड्रैग हो रहा है. तो आई विल सेलेक्ट द बटन एंड लेफ़्ट साइड से 30, राइट साइड से 30, 10 फ्रॉम द राइट लेफ्ट मे बी. ख़त्म ही कर देते हैं. नहीं, ख़त्म नहीं करते, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. 10 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 15 कर देते हैं. 15 फ्रॉम द राइट, 15 फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, लेट्स मेक इट 18, 19, 20, 20 फ्रॉम द लेफ्ट. यहाँ ऐसे कर लो,
यहाँ फिर इसके अंदर ये होता है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि वो फुली स्ट्रेच हो जाए। तो उसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट लाइन रखनी है या स्ट्रेच, हाँ ये स्ट्रेच कर दो, इसका मसला ही ख़त्म, वो ऑटो एडजस्ट हो जाए खुद ही करके। ठीक है। सो या जॉइंट असॉल्ट सेमिनार ये बहुत बेस्ट हो गया। ठीक है। और इसके साथ साथ एक वॉच वीडियो का बटन लगाओ। तो आई विल कॉपी दिस वन फ्रॉम हेयर, आई विल पेस्ट इट हेयर, ऐसे करके। अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो कंटेंट में जाके पहले तो मुझे वो आइकन लगाना है, तो यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं। तो यूट्यूब, यहाँ पे जॉइंट असॉल का आ जाएगा आइकन स्पेसिंग। तो आइकन बिल्कुल पास पास करना है। अलाइनमेंट आइकन की स्टार्ट पे है, उसको एंड पे, ऐसे स्टार्ट पे कर देते हैं, नहीं उसको एंड पे कर देते हैं, जॉइंट असॉल। और वॉच वीडियो, हाँ जी, वॉच वीडियो। वॉच वीडियो करते हैं, आइकन की स्पेसिंग थोड़ी सी क्रिएट करते हैं ऐसे करके। और इसके बैकग्राउंड में पहले तो मैं ये ख़त्म करूँ ना, मोशन इफेक्ट जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको जो स्टिकी है वो भी छोड़ो, ये जो इन्हांसन आप पे ना इसको बंद करते हैं, अनटिक करते हैं भाई, अभी कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो या और इसका फिर स्टाइलिंग में जाके इसके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं ना बटन के, अब वो सेट करो ज़रा जल्दी से। तो इसको स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेच इसका ख़त्म करते हैं। अब मुझे उसको मैनुअली, बल्कि स्ट्रेच भी कर लो तो भी ठीक रहेगा। उसकी जो बैकग्राउंड कलरिंग है ना वो भी सारी फिर आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बस कलरिंग एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बाकी तो वो एडजस्ट हुआ हुआ है। तो यम 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 सो मेक इज द अलाइनमेंट टू मे बी लेफ्ट। टेक्स्ट का कलर जो है वो कीप इट टू ब्लैक, और बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ से सिलेक्ट करके मेक इट ट्रांसपेरेंट, ऐसे करके। तो ये हो गया। और होवर में भी जो है टेक्स्ट का कलर जो है उसको हम ब्लैक ही रखते हैं, या फिर न्यू हेडिंग कलर जो है वो रखते हैं। और उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है। ये और नॉर्मल जो है टेक्स्ट का कलर वो ब्लैक नहीं था, उसको मैंने न्यू हेडिंग कलर जो है उस शेड में उसको मैंने कर दिया। ठीक है। सो दिस इज समथिंग क्रेजी नाउ, यस दिस इज गेटिंग क्रेजी। अच्छा, अब मैं ये टेक्स्ट का शेडो लूँगा। मैंने इसके लिए अलहदा से स्लाइडर लगाने का मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है मुझे स्लाइडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में हो जाएगा। हम इसको आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके इसके बटन के जो बैकग्राउंड कलर हैं वो यहाँ से मिलेंगे नहीं, मुझे मुझे ऊपर से जाके लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी द कलर कोड फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे जाके वॉच वीडियो पे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट शेडो के ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ये वाला कलर कोड पेस्ट करेंगे हेक्सा में, उसका ब्लर हमने ख़त्म कर दिया। हॉरिजॉन्टली जो है, हाँ नहीं वो इससे नहीं अचीव होगा, जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो चीज़ नहीं बनेगी, मुझे इसके नीचे ना वो कुछ ना कुछ बॉर्डर खुद मैनुअली डालना पड़ेगा, फिर ये अचीव होगा, ये ऐसे अचीव नहीं होने वाला। नो, दिस इज़ नॉट गोना वर्क एनी वे। अगर मैं इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी लगा दूंगा ना तो बॉक्स शेडो इस पर नहीं लगेगा। देखे ना, यहाँ पे टेक्स्ट शेडो है, तो टेक्स्ट शेडो के बाद फिर आगे बॉक्स शेडो कुछ नहीं है, बॉर्डर लग सकता है, बॉक्स शेडो है। लेकिन अगर मैंने बॉक्स शेडो लगाया यहाँ पे जस्ट इन केस, ये देखो, तो वो फिर पूरे उसका बैकग्राउंड क्रिएट वो कर रहा है ना, तो वो चीज़ तो नहीं मुझे चाहिए। जैसे कि इसने ये चीज़ क्रिएट की है ना, तो मुझे ये तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो नीचे चाहिए उसके बॉर्डर। तो बॉक्स शेडो इज़ नॉट गोना वर्क हेयर लाइक दिस। और इसकी जो पैडिंग्स है ना वो भी मुझे टॉप बॉटम से कुछ ऐसा नहीं क्रिएट करना। तो आई विल सेलेक्ट ऑल एंड मेक इट टू डिफ़ॉल्ट जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट। इसके साथ में चक्कर ये करना है कि भाई इसको सिलेक्ट करो, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, इसको इसकी पैडिंग्स ब्रेक करो, ला के इस बटन को सिलेक्ट करो,
इसकी पैडिंग ब्रेक करो ताकि ये बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ कोनों पे जाके टच हो जाए, ठीक है, उसमें स्पेसेस ना रहे। आई विल सेलेक्ट द होल कंटेनर ओवर हेयर, गो टू लेआउट, और लेआउट में जाके उसकी जो अलाइनमेंट है ना, अब आके उसकी सेंटर कर दो ताकि इधर से स्पेस वो दूरी वाला फैक्टर ही ना रहे। अब इसके अंदर ला के एक डिवाइडर रखो, डिवाइडर वो इसके अंदर रखना है, वॉच वीडियो के नीचे। वह वीडियो उसकी विड्थ जो है वो शॉर्टन जितनी आपको चाहिए, वॉच वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसकी जो आइकन स्पेसिंग है उसको सेट करेंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ से जाके जो उसका आइकन का साइज़ है बटन के अंदर, बटन हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, बॉक्स शेडो, बॉर्डर टाइप, हाँ टाइपोग्राफी के हिसाब से इसका बटन है, अलहदा से नहीं है। ओके, तो कीप इट टू 18 जैसा है वो बाय डिफ़ॉल्ट। तो एसेंट शेड, ठीक है, तो एसेंट शेड, लेकिन मैंने इसको कंटेनर को सेंटर लाइन किया था, ये सेंटर में क्यों नहीं आया? देखा ना, यहाँ ये सेंटर लाइन क्यों गायब हो गया? इसमें क्या ऐसा था? अच्छा जी, तो इसकी टाइपोग्राफी को सिलेक्ट किया एंड मेक इट टू टेक्सटाइल, हाँ इसे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है, और इसकी जो आइकन स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा दी। इसे आइकन का इसको देता तो है ये स्पेसेस अलहदा से, आज क्यों नहीं दे रहा? ओप्स, व्हाट आर यू डूइंग यूट्यूब? हाँ यूट्यूब भी प्रमोट नहीं कर रहा और कोई देखने नहीं आ रहा, सही है, कोई बात नहीं, मैं तो देखूँगा। अच्छा, तो आई पुट अ डिवाइडर, आई पुट अ डिवाइडर डाउन हियर। ओह, डिवाइडर की वजह से ऊपर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उसका गैप ज़ीरो करूँगा और उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी हेल्दी करूँगा, मोटी, और फिर उसका जो मोटी का कलर है ना यहाँ से एसेंट कलर रखूँगा और थोड़ा सा मोटा करूँगा इसको, और इसका जो कलर है यहाँ से जाके थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी ये किया, थोड़ा सा हेल्दी कर दिया। एडवांस में गए, मार्जिन ब्रेक किया और नेगेटिव मार्जिन लगा के यार ये बड़ा मसला होता है, इसको ना मुझे ऊपर रखना चाहिए था इसके, ये गलत हो गया मेरे से यहाँ पे। तो आई विल सेलेक्ट द नेविगेशन फ्रॉम हेयर, और यहाँ से डिवाइडर को जो है वो मुझे बटन के ऊपर रखना चाहिए था, या बटन को डिवाइडर के नीचे बटन ऐसे करके। अब मैंने ये वाला जो, ओह इसमें वैसे टेक्स्ट का स्ट्राइक थ्रू भी तो होता है, टेक्स्ट अंडरलाइन, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, इटैलिक, डेकोरेशन, अंडरलाइन, तो या अंडरलाइन का फिर वो कलर चेंज नहीं करने देगा यार, क्या है? वो चीज़ बनाने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी। ओके, तो वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बनेगी ऐसे। सो टू मेक इट दैट वे आई हैव टू, ओप्स ये मुझे ज़्यादा ऊपर ले गया इसको, डिवाइडर को, क्योंकि उसको नेगेटिव मार्जिन लगा हुआ था। तो मैं मार्जिन उसका ब्रेक करूं, और इसको मैं क्या करूं कि भाई मैं अब थोड़ी सी मुझे ना पंगे लेने पड़ेंगे मुझे। मुझे 50 का टॉप से लगाया और इसको पकड़ा मैंने इस चीज़ को, और इसको मैंने टॉप से -50, इसको भी 50 से टॉप का, लेकिन इस टाइम -50, और इसको फिर मैं थोड़ा सा ऊपर ले गया जितना मुझे चाहिए, और नीचे वाला जो डिवाइडर है उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके उसकी जो विड्थ है वो शॉर्टन की जितनी मुझे चाहिए थी, 60 पे। बटन को पकड़ा, बटन को नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग किया ऐसे, 45 पे रख दिया, और यहाँ से स्टाइल में जाके इसको जो अंडरलाइन किया था, आई विल नॉट अंडरलाइन इट, आई विल मेक इट टू डिफॉल्ट लाइक दिस, ऐसे करके। अब ये करके वो चीज़ बन जाएगी जो मैं बनाना चाह रहा था इतनी देर से एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अब इसके अलाइनमेंट्स का अगेन वो फ़र्क रहेगा, तो मुझे बटन, वो टेक्स्ट को जो है वो बटन वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा
I have to keep it to इसकी देख लेना अलाइनमेंट्स जो है ना वो इक्वल हो रही हैं कि नहीं हो रही, तो बस एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा नॉर्मल. वॉच वीडियो लाइक दिस. तो ये ज़रा कुछ अच्छी चीज़ बन गई. ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी सी नहीं खासी टेक्निकल है. यहाँ पे कितने हैं, एक दो क्या पता नहीं कितने मैंने अब तक यहाँ पे इनर सेक्शंस बना बना के ये चीज़ बनाई है. ठीक है, तो आप थोड़ा सा खप जाओगे इस चीज़ को बनाते बनाते. बट आई थिंक दिस डिज़ाइन इफ़ यू कंपेयर टू दिस वन इज़ वे बेटर देन दिस वन. ये है हर कोई बना सकता है, ये है हर कोई नहीं बना सकता. धुआं निकल जाएगा भाई, सीधी बात है. मेरा धुआं निकल गया मैंने 1 घंटा लगा दिया सिर्फ ये बनाने में. ठीक है, और इट्स अ क्वालिटी डिज़ाइन एंड इट गिव्स यू अ वाइब दैट यू आर कमिंग टू सम सीरियस पर्सनैलिटी कोचिंग. तो उसके क्लाइंट्स भी ज़रा बड़ी एज के हैं, यंग नहीं है. तो यंग लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस जो ओनर्स जो हैं जिन्होंने $1000 का टिकट ख़रीदना है या 5000 का, $30,000 का, वो इस तरह की चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, वो इनसे इंस्पायर नहीं होते. मेक सेंस. तो यस, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ इट, दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड. ठीक है, और यहाँ पे नीचे ट्रस्टेड बाय ये वाली जो कंपनीज़ हैं, इसके नीचे अब मुझे और नीचे डिग डाउन करना है. तो यहाँ पे बटन तक कंटेनर लग गया. तो ये मैंने काफ़ी रिवर्सल करके चीज़ बना दी है, उल्टा कर दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, बट आप लोग कर सकते हो अब इस चीज़ को सही से. मुझे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बनानी है, बाद में मैं इसको ठीक कर लूँगा. और इसका जो बटन का कलर है वो यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा डार्कन करना है, बिकॉज ये वाला लाइट कलर ऑलरेडी यहाँ पे लाइट है तो कंट्रास्ट नहीं बन रहा, सेम मैचिंग में ग्रीन ग्रीन हो रहा है सब, तो वो वाइब नहीं आ रही बेसिकली ना. तो टू कीप दैट वाइब थिंग हैपन ओवर हियर, आई विल सेलेक्ट दिस बटन. और यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर जो है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर यहाँ से आई विल मेक इट टू न्यू हेडिंग कलर. और जो बटन का कलर है, टेक्स्ट का कलर, आई विल मेक इट टू मे बी बैकग्राउंड ग्रे, नहीं वाइट करते हैं. ठीक है, तो यप, देयर यू गो. बिटवीन वेयर आर यू गाइज फ्रॉम वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, और क्या करते हो, डू लेट मी नो in the comment section. I would love to talk to you guys and engage actually. So I will select the whole parent thing over here. The spaces between this button and this button is too less, I have to increase a bit. So I will go to the whole container setting and go to layout, and layout में यहाँ पर आके column level पे I will increase it to 20, 30 as you wish to make it happen for you like this. So join us all seminar. So the hover color is like vanished now, so I have to set it up, because जो पहले कलर्स लगे हुए थे वो थे साइड सेटिंग से लगे हुए, सो दैट्स व्हाई दे वैनिश्ड एक्चुअली. सो आई सेलेक्ट इट टू, so yeah, this was a design inspo that we were creating, and this is the watch video that we made. Now we have to put this image, the trusted by ratings. So we have to bring ratings as well, and we have to put these images as well, and this is the images that is created using Canva. And this is just an upload over here. If you're thinking that this is a very creative design somebody have created, so yeah, creative very sharply with a very good mindset. So I will drag another container. So it's already too much containers in here, so that's why there's already too many things happening over here. There's too many containers inside, so इस वजह से वो नीचे जा नहीं रहा. So I will keep it as it is, where it is, and I will select the divider and try to bring it down there under the parent one. I think it will go to the downside. Yeah, it's coming over here, so I will not drag it too much. What I have to do is I have to add another container and bring it down here like this. I have to put my content in it, the divider one, divider section, the line that you can see in the design, this one over here, the gray line, to create a partition over here. Go to gap and remove that gap. Yep, so this is the one container.
and then I have to create another container down here. So again, more complications are welcoming to the design. Guys, where are you guys watching? Do share in the comments. I would love to engage with you, answer your queries, and see what are you guys doing and what I'm doing it. If you guys can help me do something more crazy thing, I will be happy to learn from you guys as well, inshallah. So not, I will not try to increase the gap. I'm trying to actually uh, increase the width a bit, maybe to 2. Yeah, like this. The it's too much highlighted, so I have to make the color too light. It's too much dark color for me, so I will set it to background color gray, a very light color to make a partition over here, like that. Oh, yep, Mazdar. So now I have to create so the alignment for this one was nothing, and if I put anything down here, so maybe it will come in the row format or maybe it will go in the column format, because and I want some grid underneath. So what I will do is I will select a grid over here, and I will put the grid section over here. So column, only 2 columns, 1 row, like this, and the gaps between the column I'll break it and make it to maybe 10 gap between, or maybe 30 as above, right there. So now I have it. Now I have to put 2 more containers inside the grid, so to make this design work happen accurately for us. So like this. Now I have to select the parent container and remove the padding over here, and now I have to put a rating thing on one side. I'll search for rating if Elementor Pro really features rating stuff. Maybe Elementor Pro, or maybe it's the Gutenberg side that we did. Okay, so anyway, I have my ratings, so I put it over here. Go to style and select the color to your primary colors, not yellow. Okay, so if you want to keep it to yellow, so rating color code. So I go to color hex over here, and I select the color code, maybe this one. Because I want something to be active and actually engages your eye. So I'll select it and paste it like this. It's too much engaging. It is too much. I don't want it to be. Okay, I select to this. No, it's not selected. Let me paste it again. No, I selected a wrong color code. FFA54. Is that right? FFA54. FFA54. FFA534. FFA 534. 534. It's a 6-digit code, by the way. FFA 534, like this. So I have my color codes, and there is again a spacing over here. So I will select this and go to advanced and break those paddings, so we can remove those gap from here. And if I select the whole parent container, so I have to reduce the spacing in between all of these. So what I have to do is I will go here, break the 20th padding over here, and create a row padding, maybe 10 in the row format, 10, 12, as you wish it to be. Make sense? So yep, that's how it works. I will select the whole single container again and set the alignment to center. Here again, set it to center. So whatever I put in, it will become in center by default. I'll select the rating, keep it to 5, increase the size a bit, like this, increase a bit of spacing, minor. ठीक है,
unmarked color to maybe background white, and the rating scale is this, ratings are this, alignment to left, and the rating that I got is 4.5, maybe 4.9, 4.8, like this. So now I get it, and I have to reduce the size, is too much, make it smaller, and you can go in your colors as well if you wish to. So this one can go as well with it, but I will keep it to golden that we were working on. Or what I can do, or what can I do is I will copy the color code from here, come here and select the color to the golden color to maybe this one, and make it full like this. Yeah, like this. But if he's a coach, so maybe the trust pilot color as well also work. So I make it to new heading color like that. This may also work, this should work, but I will keep it to this one, green. So highlighting भी है थोड़ा सा. Okay, so क्या है यहाँ पर? Total reviews 4.8 out of 5. Total reviews 4.8 out of 5. I'll copy the heading from here, come over here and paste, so it will come downside, and make it to 16. Go to content and make a क्या इसने लिखा था कि our rating 4.8 of 5. Our rating, oh, so this is a good feature. मतलब यहाँ से आके क्यों इसको करूँ फिर, मतलब बोल्ड में, तो इसका जो वेटेज है उसको मैं नॉर्मल में कर दूँ, और like this, our rating, bracket open bracket band, 4.8 out of 5, and typography to maybe medium like this. I'll select the whole one. Oops, oh come on. So I shift click and select everything and click Control B, or maybe make it bold like this. So our rating 4.5, and let's make it to normal size, normal weightage, so it could get a highlight that something in bold over here. Make sense? So cover this whole thing. I have to stretch the spacings, not too much, a little bit. There you go. Now I get the right at point where I can make it look as we wish to see, and make the alignment to end, because it's becoming in the top thing. I want to bring it to the bottom thing like this. There you go. Okay, so this is working now perfectly fine. Now this is something that I'm really creating. I can call is good product. Then this thing, or maybe this one I was creating. Then this what we see. Oh, so this is taking time. I think I need to take more time from John to actually complete the design thing. Okay, let's see how much we could cover, and we can make a better design for him. So it's a real-time designing thing. I will drag this to some other page. I will not make it actually removed permanently. I will drag it to some other page
not on this one right now. I'll go to advanced and go to responsive and made it hide on desktop tablet, so I hide it temporarily from here so nobody will see. So whoever lands on this page will see this thing. Wow. Makes sense. So the so I know now I now need to play with the min height thing. I will reduce it to 0 because I have to play with the padding, because I don't want too much padding on the downside. I want to see more sorry, I want to see more padding on the downside, not on the top side. Yes, I don't want too much on the top side. I want it more on the bottom side. So what I will do is I will break the paddings and make it to default 10 padding. That is by default. Go to top and make a 100 over top and 150 from the bottom. So 150 is from the top. So whoever landed should see this. So 150 is too much again, got too much closer. So make it to 130. Yeah. Embrace customer service and training. Let's make it to 100, not 120 really. Oh, where did this gone? What happened to you? What? Please don't say this. I have to create it again. It has some glitch sometimes, so shit. Damn it. Oh man. I have to remove the margin thing. I have to put a button over here. Put a button to drag it a bit. So now there's so many containers over here, so that's why it's not doing it that way for me. I will select it, the whole container from here, go to navigation, and I will click on it, and it will show me I'm here. So it will I will drag it to the top like that and watch video. Watch video. The background color now, so make it to transparent. Text color to new heading color. Go to content. I have to add an icon, so video player. Yep, I have to select the player over here like this. Icon spacing to this, and now I have to go over here, go to paddings and break the whole padding thing. Select it and select the container in here and put the content in center. Okay, so the content is in center, so why there is so much spacing? Select this. No, it will drag it over there. I don't want it to go there, so keep it in start on, keep it natural where it is. Select this one. I will go to paddings, remove the paddings around it, select this one. Nothing gonna work. I have to bring it center to the center myself because both are already perfect at their places. Now what I have to do is I have to select this one, go to paddings and increase the padding from the top for this one. Not paddings really. I have to work on margins, otherwise it will go down. Break the paddings, break margins, and maybe 15 margin from top, or maybe top 20. I will select the divider,
and make negative margin to it to give it changes, to revive it where it was already there. So the green color down here doesn't seem too good over here, so I have to select the whole container and keep it to natural where it was by default. So the default spacing was more better than what I did. The divider down here doesn't seems to be a good vibe color, so I'll select to the background gray or maybe text gray color. Between without divider this looks more pleasant, right? So why I'm keeping it? So there's a negative margin, maybe it's hidden in some you know. So I have to remove all the paddings margin thing. Yep, all removed. Okay, watch video. There you go. This looks better. Yes. I select the whole container. Nothing over here. I select this button thing. So there is a negative margin from 20. I remove that margin. It's not coming in center. Why? I select it. There's no padding thing to be here. I keep it to normal. Keep the content to center align. So why there is some spaces from the bottom. Select this. I remove these things. Should not be there. Everything should be in center now. There you go. Now I got my design thing ready. Boom. And I hope if I put this thing, this element, I copy this one and put it here like this and make the column to maybe 3 columns. Okay, so there is 4 brands, so in case I remove the one of them, just in case I remove this like this, I made it to this one. Like this. There you go. This is this looks pleasant. I'm back, Irzi. Okay, thank you so much, Irzi. Between Irzi, what do you do? And you're from India, right? क्या करते हो आप? What do you do? I'm leaving for a break to offer my Asr namaz. Then I will come back again. I'm again sitting here. The stream will go as it is. I will just be away from camera for some time in a while. So the next section is the gray color one. So I'm removing it. No, not really. I'm not removing it anyway. I'm just hiding it for some time so we can use it later for our purposes. Click over here. Add another section. Now I'm getting crazy minds things going in my mind about it to make it happen. So I select the background color and background to background gray like this. It was before, but I want to now keep it to a more lighter version for it. There I select this color, new background color, new background color, click create. I will copy the heading from here
paste it here, our short story style, and bring it to center, our services, and our for our services thing, our services like this. I go to layout and I bring the min height for it, maybe this, bring the content to center, yes, center aligned, select the style services and make it to transform it to uppercase like this, and the roboto is the style, Montserrat is for the main headings. Yeah, so the letter spacing over here is bit better than what we're doing. So I go over here and select this one and letter spacing, increase a bit like this. Okay, so one thing that was going through in my mind is how about I make this thing a bit rounded from the corners. I go to advanced, select the whole container, go to advanced, go to background, sorry, style में background, सॉरी बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस ब्रेक किया और टॉप से 22 का 22 का नहीं 10 का दे देते हैं या 12 का राउंड कर दिया यहाँ से, और एक साइड कर दी राइट साइड से, यहाँ से राउंड कर दी। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आई सेलेक्ट द कलर टू मे बी प्राइमरी लाइक दिस। अब ये देखो थोड़े से राउंड हो गए साइडों से, ठीक है, मेक सेंस नाउ, सो लुकिंग बेटर देन बिफोर। तो वो थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग सा ना वाइब आ जाएगी, और से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और इसका जो कलर है, नो, हम इसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे ही रखते हैं। ये क्या कर रहा है, प्राइमरी कलर्स ऐसी की तैसी, इसको पब्लिश करो यार पहले। मुझे ये कलर क्यों नहीं दिखा रहा? तो ये न्यू बैकग्राउंड कलर जो है ना, ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको डिलीट करो। हाँ जी, न्यू हेडिंग कलर है, तो प्राइमरी कलर जो है ये वाला ये रहने देते हैं, सेकेंडरी जो है वो भी रहने देते हैं। फिर मुझे स्क्रॉल करने का ऑप्शन ही दे रहा था ना, इसलिए मुझे उसको आना पड़ा। तो इस साइड पे तो बैक करते हैं, इसको बंद करते हैं साइड सेटिंग को। वही 528 हो गए, मैं अपनी असर पढ़ के आया। जब तक ये आ जाता है इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिशमेंट देखे बगैर ही कर दिया, ओए डिलीट ना हो जी प्लीज़, शिट, ये नहीं करना आप लोगों ने, ये मिस्टेक ना हो जाए यार, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। शुक्र है, शुक्र नहीं गया कहीं। तो अजान ब्रेक और अब है नमाज ब्रेक, ठीक है, तो आई विल बैक आफ्टर नमाज।
Okay, hello, we are back. Okay, so guys, thank you so much for keeping the patience. I'm back again with the design thing. Okay, so far so good. It's going amazing. Uh, okay, कुछ भी नहीं. Just I'm back. I'm all set. I'm just setting a video. See, okay, everything is going set. Okay, I'm back. Back. Nobody seeing me. Okay, सब चले गए. चलो कोई बात नहीं. अब सब आ जाएंगे. ठीक है. Yes, everything. My voice quality is amazing, na, and the setting, the stream isn't lagging. मज़े का experience है. Oh my God, my face filler is also brighten. Wow, मज़ेदार. तो देखो भाई, मज़ा आ रहा है. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. आप लोगों को नहीं आ रहा. अभी आएगा मज़ा. अभी हम इसका कलर रखते हैं वाइट. मेक इट टू दिस वन आवर सर्विसेज. उसके बाद फिर योर की टू अनलॉकिंग सक्सेस. तो यहाँ पर हम की टू अनलॉकिंग सक्सेस के कुछ पॉइंट्स डालेंगे. तो यहाँ पर हम डालेंगे हेडलाइन. तो हेडलाइन हम ऊपर से ही कॉपी करके लाएंगे. कॉपी दिस नहीं, चूँकि हमने यहाँ पे अब सॉलिड हेडिंग डालनी है ना, वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे फिर हम एक हेडिंग डालेंगे और विल ब्रिंग इट टू सेंटर. और उसके बाद फिर योर की टू अनलॉकिंग योर की टू closing more deals and making customer relationships like this. Bring the typography to this and go over there and now make it to Montserrat. Montserrat. There you go. Like this. हुआ ना थोड़ा सा मज़ेदार. And the brand color, the colors are gray, not fully, but not black fully as well. It's kind of charcoal color. So I make it to secondary black, or the text black. No, make it to secondary black or maybe a bit darker in secondary. Like this. There you go. Okay. Better now. The line height is the issue over here. The line height is too low. So I will bring the line height in. Closing modules and building relationships कर देते हैं. And building relationships. Building relationships. There you go. Oh, this is something is giving a vibe actually. So our services doesn't match this headline anyway. So it's giving a different vibe, different feeling. So I will not keep it to it.
I will change the heading to our services. And go to style, bring it to the center, and bring it on the top. And not applying shadows. Roboto medium, let's make it to uppercase. No line height added. Yeah, like that. Select it, go to advanced, and go to paddings maybe, and from the bottom bring it to 20 की padding from the bottom. थोड़ा सा खुला होना ज़रूरी है, अच्छा लगता है. और let's test this mask thing. एक्चुअली मैं देखता हूँ इधर कुछ और मिल जाए मुझे. पोस्ट है, गैलरी है, स्लाइड्स है, एनिमेटेड हेडलाइन है, हॉटस्पॉट रियली डजंट टेस्टेड एनीवे, टीओसी है, शेयर बटन्स हैं. पेपाल है, वीडियो प्लेलिस्ट है. सर्च का टैब है. नो, नॉट दिस नीडेड एनीवे. लिंक इन बायो भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद फिर इसके नीचे एक और, अच्छा इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी पहले लाइन हाइट लगा देंगे ताकि हम यहाँ पे मिन हाइट जो है वो स्पेसिंग क्रिएट कर सकें. काइंड ऑफ वैसे. इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, वो फील नहीं हो रहा ग्रे लगा हो इसको. फील नहीं हो रहा वो ना, ग्रे जो है हमने लिया ना वो बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया है. ओह वाइट लगा हुआ है, ग्रे तो है ही नहीं. अच्छा जी, तो ये न्यू बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्ट करते हैं. यस, नाउ आई गेट इट. क्यों नहीं आ रहा था. यहाँ से साइडें भी थोड़ी सी राउंड है उसकी. ठीक है, देखने वालों को नज़र आ जाएंगी, जिनको नहीं देखना उनको नहीं नज़र आएंगी. देयर यू गो, दैट्स हाउ दिस वर्क्स. तो ये कर दिया. और उसका थोड़ा सा ना ब्लूइश शेड में लगा हुआ है, हमने बिल्कुल ही ग्रे में वाइब में दिया हुआ है. तो ये मुझे अच्छी चीज़ समझ आई इससे. तो हम इसका प्राइमरी कलर लेते हैं ये वाला, और इस कलर को ला के ना यहाँ पे लाइट बनाते हैं. इसको ग्रे शेड में रखते हैं. या फिर ये वाला, और इसी कलर को ट्रांसपेरेंट. Oh, now I get it. Now this is something good that I should have been looking for this one rather than doing it all manually. So this was something amazing. This sounds crazy, and this is amazing. Boom. Let's see if it can show me specific services tab. Yes, this is how it's gonna look like, and this the vision tab. We have worked with 200 plus companies globally. Then this one, this thing, this is an image by the way, and it has settled down its points accordingly.
And if it's not image, somebody can teach me, to most welcome though. Let me see if Ajira could come. So Hajra, कौन है और इधर यहाँ पे एलेक्स. अच्छा जी, so I have to put a dummy text underneath. So I just called Hajra and Alex to actually come to the stream and guide me through a bit about the design. Okay, so I have to put same color thing underneath. Otherwise, what I can do is I will add a container. If I have to create every whole design in like one, theme, so I don't have to go to another one. I have to create underneath everything. So let's do it. I will create an heading, a short description underneath. So I'll go to a description like this. Maybe I copy this one from the top and right click on it and paste it over here like this and delete it. Select this one, go to style, we bring it to center and select this one, put a min height like this. So our programs will this is a dummy text again, dummy text area. I can actually I'm highlighting this, so if the client see the design, so he doesn't say hey Bilal, you did duplicate over here. so so I will be in a strange situation. So to get out of it, so I have to keep my safe side first. Yeah, this is amazing. This is giving the actual vibe now. Okay, so I select this one. So now I have to okay, so I have to create these 6 containers in here. So what I have to do is I have to bring in grid. So 3 columns, 2 rows, 6, and I have to put container in each. One container, other container, another one, another one. Okay, so it's a Azan happening. I will just keep quiet for some time and we'll be creating the design that you guys will be
Okay, so I'm here. I hope the voice is clear. Now I'm back. Actually, it was Azan happening, so just I was around, just editing the things in the backend. Okay, I've put a grid over here. So what I have to do is, instead of adding containers one by one to each, first of all I have to do is to create all the things for myself of one fix good container done. Just duplicate it and you're done within your, your thing. So I select the whole container back again, and I go to border and go to, I didn't give the border color, I did it, but it matched with background actual. Okay. Okay, so I make it to maybe new heading color. Yes, right there. Now this is looking some better design, and select it. I select this one, go to advanced, put a padding of maybe 22 inside from the four sides. So yeah, now this is building a better product rather than this thing that I made this down here. This will actually made John, way, what did you did this with me? Just close this design. I don't want to work with me. You're an unprofessional man. So before I face all that thing, I have to just move this thing out. So I'm moving this one as well. I now seeing the design that I'm creating right now itself, not anticipating me, that I did some good job. I feel like I was just playing around with very basics, not even appealing me. So how could it appeal John? This shop thing could be, but not right now. So I go to responsive and hide on tablet and PC everywhere. So I just see this design only. Service culture, I will make a customized one and put the description, colors and everything like this. Nothing changed over here. I made my own custom SVG and upload it over here, just in case 3 year service culture. Okay, so proven 1 2 3 4 5. 5 is the okay. Proven process. Proven process. Okay. Proven process. Okay, driving service culture. अच्छा जी. So I'll just select this inner container over here and duplicate it. So make it to process for proven process. Proven process for driving a service culture. For driving a service culture. What happened to this color actually? Maybe I make the icon color to this one and come over here, and maybe I make the color to this one like this. Looking better than before. Yes, it is. So I select the whole sum from here and bring it to the center. Okay, so there is already duplicates being created, so that is why it's getting long. So I have to remove them from the bottom, because at the end I have to duplicate this one. Duplicate.
duplicate it, and finally duplicate this one as well. So I have to remove this one, delete it, delete it, delete it. There you go. I have to again add a min height to it. Like this. So it will appear like this, one line for each service that we offer. Okay, so I have to increase it to maybe 1100. So this is how it looks like, but the gap is it also equal? I have to see what does it say. Yeah, equal designing, but it is creating a shadow thing whenever the cursor is brought to it. So this is something new, and the background color is also completely blue. I have to make it a bit lighter, more lighter. Yeah, right there. And if I have to, if I sounds that the this is the parent container. If I select the grid, if I see the spaces between in here in the this one row format is not enough for me, so go over here, go to layout, select the grid and remove the gaps, and in the by default it should be maybe 10, 20. Yeah, now you want the row gap to be increased, so make it to 30. So it will appear like this. Ooh, everything getting uh, no stream good. Okay, so the space between here is still too low. So to build this space, what I will do is I will drag a spacer in here. I will drag a spacer out, and I have to put this here, and I will copy this one. I will put it here as well. Instead of playing with padding thing, you can do this instead. This also works fine. So the space now here is too much. I have to make it to 10 maybe. Yes, right there. Now the spacings will be equal, so it may look more better than this thing, like squeezy. So parent container, I make it to grid, go to advanced, sorry, layout, and increase the space between columns to 30.
right there. So it's 6 p.m. now. I have a podcast at 7:45. Yes, it's almost 8 p.m. And then I have to review this website to client at 10 p.m. Mm-hmm. Let's complete it, guys. It's taking time. Oops, what's happening over here with the space? Oh, the headline thing. So let's make it this way that we will be offering leadership skills. Will be private coaching. I think client will offer these things. Private coachings. Anger management. Anger manage. नहीं बर्नआउट मैनेजमेंट हाँ बर्नआउट है बर्नआउट बिकॉज वो कस्टमर से केयर देता है वो लोग बर्नआउट हो जाते हैं ना तो वो बर्नआउट मैनेजमेंट वो सर्विस हो सकती हैं माइंडफुलनेस ट्रेनिंग हो सकती है B2B ट्रेनिंग्स हो सकती हैं B2B ट्रेनिंग्स कर सकते हैं और उसके अलावा माइंडफुलनेस ट्रेनिंग यू नेम इट तो इस तरह से करके एक मैंने एक सैम्पल क्रिएट करके ना डमी वो बना के रख दिया अब इसके ऊपर वो कर्सर लेके जा रहा है तो वो एक शेडो क्रिएट हो रहा है तो मुझे केले केले कंटेनर को पकड़ के ना उसके ऊपर फिर वो शेडो वाली चीज़ बनानी होगी तो वो बनाने के लिए आई हैव टू गो टू बॉर्डर्स और उसके होवर में जाना होगा होवर में जाके बॉक्स शेडो और उसका जो कलर है वो यहाँ से मुझे ग्रे कलर का लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 1 चाहिए मुझे वर्टिकली 1 5 ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल 1 है 1 पे बात नहीं बन रही यस या हल्का सा है मैं वो हल्का सा ही रहे मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ वो जो ना वो नहीं चाहिए तो बस ये हल्का सा उभरे इट्स मोर देन इनफ और बेशक इसका कलर जो वो वाइट हो जाए तो वो भी चलेगा तो यहाँ से उसका जो कलर है वो वाइट थीम में चला जाए वाइट इज़ नॉट वर्किंग एनीवे थोड़ा सा ग्रे रहे और थोड़ा हाईलाइट हो जाए क्योंकि वो बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लूइश थीम है ना तो उसमें वो वाइट मिक्स हो रहा है इसकी वजह से वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता वो छुप जाता है दिस इज समथिंग नाउ लुकिंग बेटर ठीक है सो दिस कुड गो विद आवर वाइब थिंग तो यप
अच्छा, फिर उसके बाद होम पेज पे मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव वर्कड विथ वाला सिनेरियो। लेट मी सी। वो सर्विसेज पेज को ही बनाया हुआ है उसने। सर्विसेज पेज के अंदर ये सारा वी हैव वर्कड विथ 200 के प्लस कंपनीज ग्लोबली। तो पॉजिटिव टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे डाल ज़रूर सकते हैं, बल्कि जैसे डाला जाए तो यहाँ पे वो थोड़ा सा एक अच्छी वाइब दे देगा। अम, अच्छा, तो ये हो गया सर्विसेज का। होम पेज इसका ऐसा था। अच्छा हाँ, ये देखो ना, होम पेज का ये है। फिर अबाउट लेफ्ट टिक। अच्छा, वो अबाउट पेज का है। ठीक है। तो 404 पेज हो गए। प्राइसिंग टेबल है, वो प्राइसिंग टेबल हमारे पास है नहीं। तो ये वाला है मेरा ख्याल होम पेज ना। हाँ जी, ये वाला है। तो अनलॉकिंग सर्विस वी हैव वर्कड विथ ओवर 200 के, यही चीज़ आनी है, इसके नीचे ही आनी है। तो इसके ग्रिड के नीचे एक डिवाइडर डालना पड़ेगा। डिवाइडर मैं ऊपर ऑलरेडी किस तरह का बना चुका हूँ, लेकिन मुझे दोबारा बना डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू ड्रैग अनदर कंटेनर ओवर हियर, इसके नीचे यहाँ पर। और किधर गया? तो नीचे वाला इसके नीचे आ ही नहीं रहा, तो इसको हम पब्लिश करते हैं। ओके, दोबारा रीड्रैग करते हैं तो वो आ जाएगा। ओके, मेक सेंस। केले ही लगे हुए हैं, ठीक है। यप, नाउ द अनदर कंटेनर इज डाउन हियर, और इसके अंदर एक डिवाइडर पुट ऑन करते हैं। और यहाँ पे स्टाइल में जाके गैप्स, इसका वेट जो है उसको मेक इट टू मे बी 2, या इन द कलर टू बैकग्राउंड कलर ग्रे। वो बिल्कुल ही लाइट हो गया, उगाई भी हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा उसके नीचे। तो हम इसको क्या करते हैं कि उसका जो कलर है उसको ज़रा डार्क में थोड़ा सा ले आते हैं। मे बी न्यू हेडिंग कलर डार्क। ही डिड इट, मतलब जो भी जिसने भी वो बनाया उसने अपने तरीके से बनाया, हम अपने तरीके से बनाते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम कॉपी करें किसी को। ठीक है, तो हम अपने तरीके से अपनी चीज़ बनाते हैं। राइट दिस। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ग्रे, बिल्कुल लाइट सा है ग्रे। तो हम ऐसे करते हैं, इसको सेकेंडरी कलर जो है ना उसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। हाँ जी, कुछ यहाँ पे और थोड़ा सा लाइट करते हैं, लेकिन ना उसको थोड़ा सा लाइट क्या ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा फिर उस काम के लिए ना। तो जो वो अचीव करना चाह रहा हूँ ना मैं, वो फिर ट्रांसपेरेंट होके होगा।
तो इसको यहीं पे कलर टोन रख के ना इसको फिर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में बनाना पड़ेगा, फिर ये बनेगी वो चीज़। अभी भी नहीं है, अभी भी डार्क है हमारा, सो और थोड़ा सा लाइटन करते हैं। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सो थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी में लेके आते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर, लेकिन ना हमारा डिज़ाइन फिर उसके हिसाब से है, तो इसको थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं। उसका इतना ही है, बस थोड़ा कलर लाइट है। ओके, मोटा नहीं करते इसको, थोड़ा लाइट कर लेते हैं। Okay, so I have to put my phone on charge as well to conduct other meetings as well. Do. इसको थोड़ा सा कलर यहाँ से भी लाइट कर लेते हैं, वहीं से ट्रांसपेरेंसी घटाई जाएंगे क्या? जी, राइट देयर। हमारा थोड़ा सा ज़्यादा पतला है, हम थोड़ा सा मोटा कर लें इसको तो भी अच्छा लगेगा। तो वेटेज जो है ना वो 2.23 2.4 2.4 ज़्यादा ही मोटा कर लिया है। मोटा होने का फ़र्क नहीं है, फ़र्क है उसके कलर का, कि कलर हमें नहीं वो मिल रहा, बिकॉज वो फिर ये सारे मुझे उस हिसाब से डिमिनिश करने हैं। तो इनको भी मैं थोड़ा सा और लाइटन कर लूँ। तो यहाँ पे इसका बॉर्डर कलर जो उसको जाके हम लाइट करते हैं। सॉरी, मैंने भी देखा काम में बिजी थी। क्या हेल्प चाहिए भाई? मैं बताता हूँ आपको। एक डिज़ाइन में थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे बना होगा। अरे शिट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे बॉर्डर में। हाँ जरा, अगर आप स्ट्रीम पे हैं ना तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। मैं आपको ना बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। There you go. Now this looks pleasant, na? Now the design is amazing. So this is a pleasant piece of design now ready. Although it takes time, but it is pleasant. It looks pleasant now. Um, yeah. Um, so this is a way better design for John Chaplet than that of this Service Quality Institute did for themselves.
and we have worked with over 200k. So let's select this one, and within the container I have to add another thing down here, and it is being made using 3 containers. So 3 containers, or maybe 3 headings, 3 consecutive headings. Okay, so I have to select the whole container. I have to make the alignment to the column row format like this. Go to advanced and make it cover grow like that. I have to remove this first. First of all, I have to add content to it. No, this is not gonna work. I have to add another container down here. So we'll keep it to where it is. So I have to add another container down here. Okay, so I have to keep it in one column rather than making it multiple 3 different columns or grid into it. So I have to put 3 headings in here. One this, I have to duplicate another and duplicate another one like this. Now I have to select the whole container, go to advanced and make it grow, just in case if I shrink to it, so it will be this. Okay, so I have to bring the content to center aligned like this and put the heading in here we have worked with. So copy this one from here, bring it to here and paste it like this. Right click, delete this. We have worked with, we have worked with this one. I have to bring a heading over here, copy this one, bring it over here, paste it. We have worked with over 100k so it's not a before text actually, it's not actually highlighting text. So 100k plus companies and bring the headline to not headline, so text thing. So the accent roboto to nahi Montserrat. साइज इसका क्यों नहीं अलाउ कर रहा मुझे, साइज इसका मैं छोटा नहीं कर सकता शिट, ये क्या, अरे यार डैम.
So I have to take on headline and oh, it's from here. तो जो इसका कलर था 22, वेटेज इसका मीडियम नहीं है, बोल्ड है, बोल्ड है। हम्म 100K प्लस companies globally like this. I now select the divider color, copy the color code from here. We have worked with text color, bring the color code over here. ये क्या है, बिल्कुल ही डिमिनिश हो गया। इतना भी डिमिनिश नहीं करते। हाँ, ये होना नहीं चाहिए डिमिनिश, ये कोई ग्लिच है। तो ये हेडलाइन का जो टाइपोग्राफी है यहाँ से बोल्ड है, एक्स्ट्रा बोल्ड करते हैं। यार कम ऑन, क्या हुआ है इसको? कुछ ग्लिच चल रहा है, कुछ तो है। ये गायब नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हेडलाइन का जो कलर है वो भी तो यहीं से मैंने टेक्स्ट कलर जो है वो यही देना। इतना भी डन कलर नहीं था यार, ज़्यादा ही डल हो गया है। अच्छा, तो इस कलर को फिर थोड़ा हाईलाइट करें। इसको अगर मैं मॉन्ट सेरर से हटा के रोबोटो करूं, लिटरली ये ग्लिच गोइंग ऑन, ये है ही नहीं, इसकी सेटिंग ही नहीं है। इस तरह मेहनत करते रहो, बहुत आओगे जाओगे एक दिन इंशाल्लाह आप। भाई पीछे चुड़ैल बैठी होगी ख्याल से। हाँ बैठी है, हाँ जी, हाँ चुड़ैल बैठी है। अच्छा चले कोई बात नहीं, बैठी है, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, चुड़ैल भाग जाएगी। चलो कोई तो है ना साथ, आप नहीं हो तो। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब आयो, इतने घंटों से बैठा हूँ अकेला। अब नहीं होता दर्द मुझे, हाँ। कमेंट का रिप्लाई ना करूँ, दर्द होता है भाई। अब ना उसका दर्द लहदा है। सही है। लेकिन खैर मुझे आज ना काफ़ी मज़ेदार डिज़ाइन बना है। एंड कल जो चीज़ बनाई थी उससे काफ़ी आगे बात निकल आई है। मतलब 2 लाइव स्ट्रीम्स का कोटा पूरा हो गया। ये थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी वाइब दे रहा है। और वो 100+ कंपनीज ग्लोबली, वे वर्क विद 100+ कंपनीज ग्लोबली। मज़ेदार। क्लियरली मज़ेदार, मज़ा आया। अब यहाँ पे ऊपर जो है ना नीचे स्पेसिंग की कमी है, बहुत कमी है। तो उसे हमें करना दिल से बुरा लगता है। हाँ जी भाई लगता है बुरा, अब क्या आगे हैं। ऑडियंस बोलते हैं आपको, ऑडियंस को हम कुछ कह नहीं सकते। सही है ना, दिल पे ले लेंगे, कहेंगे नहीं, जुबान से अदा नहीं करेंगे।
बर्दाश्त कर लेंगे हम सारे से तुम। सही है, फिल्मी डायलॉग। ऐसे आया करो ना, मज़ा आता है, साथ बातें भी करते हैं, साथ काम करते हैं। तो आप बताओ ये सदाम कैसा लग रहा है डिज़ाइन? मुझे तो मज़ा आ रहा है कंपेयरिंग दिस टू दिस। इसके नीचे ये कंपनीज वाला जो था, अब मेरा वहाँ पे डिज़ाइन काम आएगा जो मैंने बनाया था, ये वाला। तो इसको मैंने हिट किया हुआ है, तो इसको मैं एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिव में जाके इसको रिव्यू फिर से दोबारा ऑन करूँ, और इसकी कॉपी बना के कॉपी दिस वन फ्रॉम हेयर। और इसकी चूंकि अलाइनमेंट ऐसे हुई है ना, तो इसके नीचे कंटेंट नहीं आएगा, वो साइड में चला जाएगा। तो आई हैव टू पुट एन अदर कंटेनर डाउन हेयर। इसके नीचे डालना है भाई, इसके नीचे, इधर नहीं। यार आज पता नहीं क्या मैसेजिंग कंपनीज को हुआ है, इतने मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज, कभी जोंग के, कभी किसी के, कभी किसी के, लगे हुए हैं आज। हद हो गई है कसम से। और ये नीचे नहीं आ रहा यार, इसको ऊपर रखो, और ना इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करो, और इसकी जो अलाइनमेंट है ना, इसको ऊपर डाल दो, ताकि ये सरदर्दी ही ख़त्म हो। अच्छा, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देंगे। अब इन सब का बैकग्राउंड वाइट है। शिट यार, कम ऑन, क्या है ये? मुझे पीएनजी में अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऊपर ऑलरेडी वो डाल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसको वाइट। चलो खैर, इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए ना आउट करते हैं। भाई आप ज़रा थोड़ी देर के लिए शांत रहो, जिधर थे वहीं रहो। नीचे वाले टेक्स्ट थोड़ा ग्रे कर दो बस, लास्ट वाले। ओके ब्रो, मैं इसको कर देता हूँ। यार कम ऑन कितने कम ऑन। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा ना वो जानबूझ के किया था, लेकिन खैर वो हुआ नहीं था मेरे से भी, ये भी बात है। अब थोड़ा सा हाईलाइटिंग हो गया, थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है। गुड पॉइंट, थैंक यू। आप बताइएगा कितना ठीक रहेगा मुझे। बाबू भैया, पैसे का चक्कर कौन सा पैसे का चक्कर, काम करो पैसे आ जाएंगे, ये होता है शौक से। हाँ, वही मज़े की चीज़ बताता हूँ। आज मैंने थोड़ी इधर लाइव स्ट्रीम करने से पहले एक लेसन सीखा। डॉक्टर इसरार अहमद, सबको पता होगा उनका। डॉक्टर इसरार में कहते हैं कि अपना एक गोल बनाओ जो आपको अचीव करना है, एंड थिंक फ्रॉम दिमाग, ठीक है। और जब दिमाग से सोच लिया कि मैंने ये करना है और मुझे इस जगह पे पहुंचना है, अब दिमाग को निकाल के एक साइड पर रख दो। अब जोश जज्बे को बीच में ला के, और वो जोश जज्बा जुनून जो है ना, वो आपको लीड करेगा। बिकॉज दिमाग जो है वो आपको हमेशा रोकेगा, यार घर भी है, फैमिली भी है, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, कैसे करना होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी होगी, ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, ये फिर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट टाइम आई लर्न दिस फ्रॉम सम इस्लामिक स्कॉलर टेलिंग मी दिस। अदरवाइज कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ऐसे कुछ बताया नहीं, एंड आई वाज डैम क्रेजी मैन, ये क्या था। तो यप, दैट इज़ द थिंग, रियलिटी इज़ रियलिटी ब्रो। इसके कलर्स मैंने थोड़े से डार्क कर दिए, एंड अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है उन्होंने सिखाई, अच्छा लगा। रोबोटो 20 का साइज़ है, एक्स्ट्रा बोल्ट है, रोबोटो तो नहीं लगा हुआ ये, वेटेज उसका बोल्ड भी नहीं है कहीं से, हेडलाइन का। तो टाइपोग्राफी में जाके, हाँ यहाँ से है, तो ये 800 एक्स्ट्रा बोल्ड, हाँ जी, अब ठीक है। इसका भी कलर जो है जाके, टेक्स्ट कलर उसको डार्क कर देते हैं, हाईलाइट। मिड वाला ब्लैक, लेफ्ट राइट वाले ग्रे। हाँ, गुड पॉइंट।
अच्छा, इसको मैं ब्लैक क्यों नहीं करता फिर? इसका ना जो हेडलाइन का कलर है एनिमेटेड टेक्स्ट का, ब्लैक तो नहीं, मेक इट टू न्यू हेडिंग कलर। मतलब वो ब्लैक नहीं है, वो थोड़ा सा ना ग्रीन सी वाइब में है, टील कलर की थोड़ा जिंक शेड में। तो ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। ये और भी अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। फिर कहाँ थे आप? इतनी देर से मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? अब आ रहे हो? अच्छा, मुझे ना ये वाली चीज़ किसी ने बतानी है कि भाई ये इन्होंने एग्जैक्ट कैसे बनाई होगी, ये होवर इस पे ये कौन सा इफेक्ट इसको बोलते हैं? अभी मैं ये स्टार्टिंग में ये लगा रहा था, जी सैप इफेक्ट है कुछ, वही है ना? काइंड ऑफ। अच्छा, खैर अभी इस वाले कंटेनर को यहाँ से कर देते हैं गायब, यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सर्विसेज का टैब बन गया। अब मुझे ये वाला जो जॉन वाला टैब टैब था ना, ये वाला, ये एक्चुअल में अब नया बनाना है मुझे। तो अब जो बनेगा वो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट बनेगी। तो यहाँ पे इसको जाके ज़रा रिस्पॉन्सिव में इसको भी ज़रा हाइड कर दें, कभी कुछ देर के लिए हाइड हो जा। अब यहाँ पे एक नया कंटेनर बनाओ, 2 कॉलम कंटेनर है। तो यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स में 2 कॉलम डालेंगे। यार वैसे 6:43 हो गए, 7 बजने वाले हैं, और 7:45 पे है मेरा इंटरव्यू। मैं सर मगरिब पढ़ लाता हूँ, मगरिब ना पढ़ी ना फिर टाइम निकल जाना है। सो आई एम लीविंग फॉर जस्ट मगरिब प्रेयर, और मैं फिर वही यहीं पे वापस आता हूँ। ठीक।
Okay, I'm back. Sorry, नमाज टाइम ब्रेक डन 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 डन. आई होप आप लोग भी नमाज पढ़ाए होगे. एंड आई एम बैक अगेन. हाजिर बीबी वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम. ओके मैं ग्रुप में अपडेट कर दूँ, सबको अपडेट कर दूँ कि आई एम बैक आफ्टर द नमाज. और या सो आई होप सो लाइव स्ट्रीम पे एक धूम मचने वाली है बिकॉज कोई ख़ास आने वाला है. यू नो व्हाट यू नो. सो या सो हाजरा थैंक यू. आप आए थे चले गए. उप्स 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 उप्स. ओके 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 माय फोन इज आल्सो नॉट ऑन चार्ज. It's 7 p.m. now. I have to run for 7:45. Okay, so about लिफ्ट तो हम जॉन का अबाउट बनाएंगे. अबाउट इंस्टीट्यूट का जो सेक्शन था वो बनाएंगे. So we already put the two columns over here, like this. Okay, wait. Okay, हाजिर आप आ जाएं. इजी ओके, कोई इशू नहीं है. So this is the one image and the other. Okay, so this is the collectively one image made using Canva. Yes, because if it's a one, so you can see the roundness is on the three sides, not on the fourth one. And it could be made using not Canva, it could be made manually as well. No issues, we can make it manually. Let's do it manually then. Okay, so we'll put an image over here. I need a consulting image, so I go to Unsplash for it. Consulting. Let's search for the consulting. ओ कंसल्टिंग नहीं. वैसे कंसल्टिंग में कितना मतलब क्लोजनेस है ना, कंसल्टिंग एंड इंसल्टिंग. सो कंसल्टेंट more of no, this is something relatable and this is so as well, and this is also a good one because we are catering the customer service thing. Customer service. Okay, so yep, there's something relatable. बट वो हमें थोड़ा सा ना वो ठीक है, और एक ऑफिस बैकग्राउंड है, लेकिन ना पिक्चर को देख के ना द थिंग इज़ के इफ़ यू पुट एज अ साइकोलॉजी थिंग, तो वो पिक्चर को देख के अगर स्माइल है ना तो वो आपको भी देख के एक स्माइल रेजोनेट करेगी और आप खुद देख कर खुश होगे. तो आई थिंक आई शुड लुक फॉर काइंड ऑफ दैट इमेज ना, जैसे ये खुश है तो खुशी दिखानी है बेसिकली. तो वी नीड एन वर्टिकल इमेज एज वेल एंड हैप्पी कंसल्टिंग. तो कुछ ऐसा. तो डॉक्टर साहब आ गई, डॉक्टर साहब आ गए. डॉक्टर हेलो. ओ माय गुडनेस. हेलो अस्सलाम वालेकुम. नहीं अस्सलाम वालेकुम. वेलकम माय वाइफ टू द स्ट्रीम. मैंने इसलिए कहा था कि कुछ स्पेशल आने वाला है, अभी धूम मचने वाली है स्ट्रीम पे. सो
My real psychologist is here. Welcome to the stream. Good to see you. बताएगा अब तो, अब आप आइए. May you get well soon, guys. इनके लिए दुआ करें. She is not well. Please pray for her good health. Uh, okay. May you get well soon, wife. Do. क्या करूँ मैं? वाइफ से बातें करूँ मैं काम करूँ? How are you feeling, by the way? Walaikum salam. How are you feeling now? Better? See, this something for you. Get well soon. Thank you, Ajra. आप आए. ये ले वाइफ आपके लिए. Thank you, Ajra, for duas for her. Means a lot. Really means a lot. आज आप मुझे भाई कहती हैं, आज अपने बहन होने का हक अदा कर दिया. थैंक यू. अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा. अच्छा, अब मैं आपका हाजरा. हम्म हम्म, जल्दी से ठीक हो जाएं. इतनी दवाएं मिल रही हैं आपको. हो जाएंगी ठीक इंशाल्लाह. अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा 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 अच्छा. ओके 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 ओके. हाँ जी. अच्छा, चले आने दें सबको. बस ठीक हो जाएं जल्दी से आप. फिर बहुत मज़ा आएगा. फिर स्ट्रीम करने का और भी मज़ा आएगा. अभी कर तो रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन है. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आपकी वजह से. ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ये पब्लिक कन्फेशन चल रहा है. अच्छा सो यार, हाजरा, इफ़ यू आर हेयर सो ये देखिएगा, मुझे यहाँ से थोड़ा सा कंसल्ट कीजिएगा कि यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है, मुझे आज तक ये कन्फ्यूजन रही है कि इज़ इट एन इमेज, दिस वन, दिस बुलेट पॉइंट थिंग, is it an image or is it made some kind of pro things or what it is? uh, मैं अपनी वाइफ को तंग नहीं करना चाहता. शी इज़ नॉट गुड. वरना बड़ा मज़ा आना था इन्हें छेड़ने का इस मौके पे. लेकिन कोई बात नहीं, पब्लिकली अल्हम्दुलिल्लाह सब आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह. अजरा किधर गई यार? मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. किधर है आप? मुझे पहले थोड़ी देर के लिए हाजरा चाहिए. अच्छा नहीं, लेकिन मुझे वाइफ चाहिए. सही, सॉरी. आज क्या कर रहे हैं आप भाई? अच्छा, मैं ना ये बना रहा हूँ. मुझे ना इसको जॉन को ये वाली वेबसाइट जो है ना, क्वालिटी इंश्योरेंस जो है, इसको प्रेजेंट करनी है. लेकिन इस वेबसाइट का जो पहले हमने रिवैम्प वर्जन बनाया था ना, वो आपको भी इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था. तो आपने कहा था बेहतर हो सकता है. तो वो बेहतर के चक्कर में ना मैं फिर यहाँ पे पहुँच गया कि मैंने उसको सारे को स्किप किया और आई मेड इट टू दिस. ठीक है. और सारी एक साइकोलॉजी और वाइफ को लेके चला हूँ साथ, और साथ अब अपनी वाइफ को भी लेके चल रहा हूँ. तो या ये है. ठीक है. तो मुझे इसमें ना ये चीज़ नहीं एक समझ आ रही कि भाई ये वाली चीज़ कैसे बनी है ये चीज़. ठीक है. तो ये मुझे बुलेट्स का बता दें कि ये बुलेट हाउ इट्स ऑल डन. तो ये बता दें. बस इतना मुझे है क्यूरियोसिटी कि ये बुलेट्स इमेज पे बनी है या देयर सम कोड इन्वॉल्व इन दिस थिंग. आपने बनाया कभी ऐसा कुछ? वाईफी ये आपके लिए स्ट्रीम पे दे रहा हूँ पब्लिकली सबके सामने, जस्ट फॉर यू ओनली. आई गेस भाई ये टाइमलाइन का एक विजेट है. टाइमलाइन का विजेट है उसमें होगा.
वैसे नहीं यूज़ किया यार। अच्छा, सही है। मैंने भी आज तक नहीं किया, मुझे आज तक यही क्यूरियोसिटी रही है कि ये बनता कैसे है। मुझे लगता है ये इमेज है, इमेज को वर्टिकल में बना के ना उसमें लगाया गया है। अगर ये अकेला अकेला बुलेट होता ना वो तो मैं लगा लेता, लेकिन ये जो दरमियान में सेंटर रो होती है ना वो नहीं लगती। अच्छा, ये कौन सा विजेट है? टाइमलाइन का विजेट है, ये कहाँ पे मिलेगा, कुछ अंदाज़ा है? वो भी बता दें अगर ऐसा कुछ है। काउंटडाउन है, टाइमलाइन नहीं है, पोस्ट इन्फो है। वाईफाई, आर यू फ्री नाउ? हाउ इट्स गोइंग? बेटिंग, फीलिंग बेटर नाउ? मतलब ठीक है, लेकिन कितनी ठीक है? हम्म, अच्छा, यहाँ पे आपकी वाइफ है? आप किसको ग्रीट कर रही हैं फिर? गेट वेल सूट किसको कह रही हैं? यार, ओह डैम इट, मजा आ गया। शिट, शिट 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 शिट। ये अब तक की ना मेरे कहते मेरे 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम के ना, मतलब पैसे पूरे हो गए हैं, सारे सारी मेहनत पूरी हो गई है। भाई, चेक द विजिट टाइमलाइन, आई गेस उसमें होगा। मैं यूज़ मैंने भी नहीं किया था। ओके, कोई बात नहीं। ना मैंने भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ़ यू गेट सम ट्यूटोरियल अराउंड इट, या इफ़ यू नो समबडी हु कैन हेल्प मी विद दिस, या हम दोनों को गाइड कर सके, सो डू गेट सम लेसन अराउंड इट एंड शेयर इट विथ मी। ये ठीक है, ये ठीक था। वाइफ है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, बस कुछ मंथ्स और, जैसे आपके आज आपके भाई की शादी थी, आई होप ही इज लिविंग अ गुड मैरिड लाइफ नाउ। आई एम ऑल्सो मैरिड, बट आई एम ओनली निकाफाइड येट। निकाफाइड में मैरिड में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। लड़के की रुखसती नहीं हुई होती, लड़का रुखसत होने वाला रह जाता है बस। सही है। अच्छा, इसको चेक करना पड़ेगा भाई, तो करना है ना, कर रहे ना। यही तो है कि यही तो एक क्यूरियोसिटी रह गई है, काफ़ी सालों से फंसी हुई है। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया था, इसीलिए एलेक्स को बुलाया था कि मे बी इज़ डूइंग बट इज़ बिजी ही। अच्छा, इसको इंस्पेक्ट करके देखें। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। लेकिन ये तो इमेज है, इसको कैसे इंस्पेक्ट करूँ? वेरी गुड। ये मेरे पास कोई टेम्पलेट है ही नहीं, ये तो इमेज है। वेरी ग्रेट। आ गए हम दोनों। ओह डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट। अच्छा, एक्चुअली मैं समझी शायद कोई न्यू स्टूडेंट है। मुझे समझ नहीं आई थी आपकी वाइफ। मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ये सही था। स्टूडेंट फॉर लाइफ ऑफ माय वाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। या बेस्ट है। ये आज कुछ नया हो रहा है। अच्छा, लड़की की भी रुखसती होती है। ओहो, ये तो सीन हो गया। मैं तो सही है। मज़ेदार। 7:12 हो गए गाइस, हैव टू रन 7:30। वही मुझे जल्दी से एक इमेज ना सैम्पल इमेज ले लेनी चाहिए ताकि मैं उसको लगाऊं और मैं उसको दिखाने जो भी हूँ। साथ साथ थोड़ा सा काम भी करना है बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट। मैंने फिर लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा अब, मैं नेक्स्ट मैं अपना
मैं अभी फ़िलहाल ये इमेज ले रहा हूँ। वाईफाई बुरा नहीं मानिएगा इस इमेज को लेने पे भी। इससे पहले कौन आई थी, पता नहीं, नाम भी भूल गया उनका। शायद सना थी जिनके साथ एक इशू हुआ था, शायद कराची की थी शायद, पता नहीं, उनका नाम नहीं याद मुझे। लेकिन उनके साथ भी बड़ा सीन हुआ था, बहुत हैवी सीन हुआ था। उन्होंने बाद में अपोलोजाइज भी किया था, सॉरी। उन्होंने मुझे कोई तारीफ कर दी थी। मैंने कह दिया था मेरी वाइफ ना देख ले, और वहीं पे वाइफ का मैसेज आ गया, वो इतनी शर्मिंदा हुई। यार वो बहुत लेवल हुआ था। मैं इनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं आप मैं आपका हूँ। आप मेरी कैसे? मैं आपका हूँ फेवरेट स्टूडेंट। ये सही है। ये लें आपके लिए। आप पहले क्यों नहीं आई? मैं आपको ही देख रहा था, कब आएंगी कब आएंगी। ये सब तो नहीं है, आप अब आई। ये सही है, आज सारे पब्लिक कन्फेशंस करवा रही हैं। ये लाइव स्ट्रीम पे रिकॉर्ड पड़ा होगा, मज़ा आ जाना है। जी जी, पता चल रहा है। आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं हाजरा, आपने तो अपने भाई को भी देखा है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अच्छा, मैं इसको इमेज को ज़रा खोल रहा हूँ, ये ना डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है। आई नीड, डोंट नीड हैवी इमेज, आई नीड स्मॉल साइज, इज टू हैवी। आई विल मेक इट टू स्मॉल साइज राइट नाउ। जी जी, पता चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माय वाइफ। सही है। ये किससे कनेक्ट हो गया जाके? इंटरनेट, इंटरनेट तो सेम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों एक दूसरे के स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई जल्दी से हो जाओ अपलोड। नोटिफिकेशन आ गया, आधे घंटे में मीटिंग है, और अभी अजान भी होने लगी है। ये क्या कह रही है यार? स्ट्रीम का मज़ा अब आना शुरू हुआ है। पहले आ जाते आप दोनों, बड़ा मज़ा आना। बाकी भी थे तो देख लें भाभी भाई। गर्ल की इमेज, ओह पुप्पो ना बने। मेरी सही बार लग जानी। नहीं हाजिरा, प्लीज ये नहीं करना था। ओह शिट, ये तो मैंने अपलोड भी कर दी, अब मैं रिमूव करूँ? नहीं भाई भी, इस दफ़ा छोड़ दें, फिर अगली दफ़ा से इल्तिजा करता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है। ये फुफ्फो बन गई है आप आज। ये सही था यार, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा। फुफ्फो का भी अपना है मज़ा है भाई। सही है, अपना स्वैग है, आप इंजॉय करें फिर देखते हैं व्हाट शी सेज। नहीं भाई, भाभी समझदार हैं बहुत ही इसमें कोई डिनाइल नहीं है। मैंने कब कहा है वो समझदार नहीं है? वो समझदार है। अच्छा, हम्म, इनकी एक्स्ट्रा क्लास लगनी है, डोंट वरी। वो पहले ही बुखार में तप रही थी, आपने सही कुप्पो का रोल निभाया है हाजरा। बस सही है। अब पता नहीं कल लाइव स्ट्रीम हो ना हो। ये क्या हुआ है, लैग क्यों कर रही है? लैग नहीं करना, पूरी स्ट्रीम लैग नहीं हुई, आज अब लैग स्टार्ट हुआ है। अब इनको कुछ मौत ना पड़ जाए।
हम्म। हाजरा। बस सही है। पुप्पो, आज से नाम आपका पुप्पो, हाजरा पुप्पो। स्ट्रीम पे आइएगा। सही है। सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मजाक, मजाक मजाक ना रहा। बहन बहन न रही, पुप्पो ही बन गई। यार, नहीं नहीं, शी इज जस्ट किडिंग, शी इज जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे हैं हम दोनों। डोंट वरी। हम्म। और अगर वो सीरियस हो भी गई तो मैं क्या कर लूँगा। सही है। मेरा तो यहाँ से मैंने इसको स्क्वायर कर लिया और यहाँ से मैंने राउंड कर ली इमेज, हाँ लाइक दिस। अब वो गोरा भी कहेगा कि यार मैंने आपको काम दिया था, आप मुझे लड़कियां दिखा रहे हो। और वो है भी 76 ईयर ओल्ड। कुछ और ढूंढते हैं। यहाँ पे फुफ्फो वाला रोल जो है ना, वो वाकई सीरियस हो गया तो काम खराब हो जाएगा। हम्म। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं जुआली। मैं वो छोर लगा रहा हूँ, वेरी लगा रहा। I'm removing it, हाजरा। नहीं नहीं, आप जानती भी हैं सब कुछ और नहीं भी। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये वाली अब मुझे थोड़ी सी रिलेटेबल लगी, कस्टमर एक्सपीरियंस के रिलेटेड। तो नहीं नहीं, इट्स ओके, ये सही है। ये मैं अभी सीख रहा हूँ, ये हाउ टू निगोशिएट विद सच कन्वर्सेशन। गोरे से पहले भाभी जी की। आपने ना भड़का रही है मुझे। वो जितना आज बुखार में तपी है ना, आज बस मेरे में भी तपेगी। मैं तो गया। पप्पू हाजरा याद रहेंगी आप। सही है। अच्छा, लिफ्ट लेफ्ट अबाउट जो है ऊपर से उठा लाते हैं। अब मैं सबके सामने तो ऐसे नहीं कहूँगी ना। ये देख के उन्होंने शैतान भी भेजा है। हाजरा पुप्पो, बस सही है। ये बहुत याद रहेगा मुझे मुझे बहुत ज़्यादा। पहले सीन हुआ था, उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था, वो जो भी लेडी थी। और इस दफ़ा मेरे, मुझे क्या कहते हैं वो, वो नज़र आ रहे हैं, सितारे नज़र आ रहे हैं। सही है। ये ना हो कि भाभी कहें कि सबसे पहले तो इस बहन को क्लास से आउट करें। अगर उन्हें कहना होता ना, अब तक कह देना था। ऐसा नहीं है, वो आपके साथ मिल चुकी है। इतनी भी नहीं है। शी नोज यू। आपका पहले भी काफ़ी जिक्र हुआ है कन्वर्सेशंस में। और ये वही है, ये जो एलेक्स को वो युगांडियन को इंग्लिश सिखाती हैं, शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एट इंग्लिश। आपका काफ़ी जिक्र हुआ है हमारी कन्वर्सेशन में पहले। सितारे गर्दिश में, मुझे गर्दिश में मुझे नज़र आ रहे हैं, गर्दिश भी नहीं है मुझे। ये सितारे हैं, ये घूम रहे हैं मेरे। यार, ये और भी अच्छी बात है। ओह, ओहो।
मुझे सब कुछ ही नजर आ रहा है, मुझे छुरियां भी नजर आ रही हैं यार। द कस्टमर एक्सपीरियंस सही है। बस इतना ही। अब मेरी खैर नहीं, मतलब चुप का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ होने वाली है। थैंक यू सो मच हाजरा, आपकी वजह से इतना माहौल बन गया, मज़ा आया। और आई होप कि इस छोटी सी कन्वर्सेशन की वजह से उनकी हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट पड़ा होगा, एंड शी मे बिकम हैप्पी ऑफ इट, एंड शी मे फील बीइंग बेटर। जज़ाकल्लाह खैर, मीन्स अ लॉट। स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर। फुफो हाजरा। तो अब इन दोनों को, कंटेनर को सिलेक्ट किया, और इसके दरमियान दो कॉलम है ना। अल्लाह पे भरोसा रखे भाई, अल्लाह पे भरोसा है। वाइफ पे भी है, और लेकिन उनको जो आपने फुफ्फा बन के तीली लगाई है ना, उस पे तीली पे भरोसा नहीं। इंशाल्लाह शी विल फील बेटर, इंशाल्लाह शी विल बी फीलिंग बेटर, इंशाल्लाह। इसको मैं 30 का गैप लगा देता हूँ, और फिर उसके नीचे 2 कॉलम है। इसकी जगह ग्रिड ही लगा दो सीधी सीधी, क्या कंटेनर के अंदर फिर वही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू हाजरा। ओ माय गुडनेस, बस सही है। मैं किधर गया? मतलब हाजरा, मैं तो गया सबसे। इस ट्रीटमेंट होती है, आई एम गोइंग। सुबह पता नहीं क्या बनने वाला है। सुबह किसने देखी है? स्ट्रीम के बाद ही पता नहीं क्या होने वाला है। किडिंग किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी फॉर इट, रियली सॉरी फॉर माई वर्ड, आई टेक माई वर्ड्स बैक, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, मैंने ये चीज़ सीखी थी, अगर आप आपसे कोई भी गलती हो जाए, कोई सरदर्द हो जाए, तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार करके उस गलती का अज़ाला कर लो। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एडवाइस की थी। सो या, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू। I will definitely take a lot of care for myself. Thank you, Haj. वही 7:26 हो गए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, बहुत 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 अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलें, अजान हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। बेशक।
ओके। ओके हाजरा। ओके अपनी भाभी को कहें मुझे क्या कह रही है मैं ठीक हूँ अभी तक, बाद में पता नहीं। बाद में भी ठीक होऊंगा, बहुत बहुत ठीक होऊंगा। मज़ा आ जाना है मुझे आज। क्यों भाई थी? बस थोड़ा सा टाइम हम और फिर हम क्लोज करेंगे, बिकॉज आई हैव अ पॉडकास्ट इन 15 minutes, आई हैव टू रन ओवर देयर। सो बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विथ अस, सो आइकन में जाएंगे। इसका जो आइकन है वो ज़रा सॉलिड में लेंगे, टिक जो है ये वाला चाहिए, नॉट द नॉर्मल वन। इन सबको क्रॉस करके इसको डुप्लीकेट लाइक दिस। ओके, तो आइकन का जो कलर है वो विल सेट टू द एसेंट कलर लाइक दिस। साइजेस जो है वो थोड़े से बढ़ा देंगे टू 16। टेक्स्ट का गाइज भी जो है वो भी 16 ही रखेंगे, इससे करके। गेट नेटवर्किंग, प्रोफेशनल कोचिंग, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल कोचिंग, पॉजिटिव इंसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे टॉप बेनिफिट्स आ जाएंगे एंड बेनिफिट्स की एक इमेज आ जाएगी। ये ग्रिड को पकड़ेंगे, इसको एडवांस में जाके ग्रिड ख़त्म करेंगे, इसके अराउंड जो है गैप उसको ख़त्म करेंगे, बेनिफिट्स। इसके बाद फिर रीड मोर का बटन बटन लगाएंगे नीचे। एक कंटेनर लगाएंगे नीचे अभी, कंटेनर कंटेनर में डिवाइडर आएगा नीचे। यार कम ऑन, ये बड़ा बैड सीन है ग्रिड के नीचे जब आ जाता है ना कुछ। I'm also okay. Yeah, alhamdulillah. You should, you must be okay, my wife. You must be always okay. That matters the most to me every time. Come on, इसको एंड पे बनाना चाहिए था। इस ग्रिड को किधर है, ग्रिड को पकड़ूं मैं। ऊपर चली जा, ऊपर सिर्फ इमेज ही गई है यार, ये बैड सीन है, ये बहुत बुरा है। इसको मैं ड्रैग में ना ड्रैग करता हूँ, इसको मुझे बनाने ही बाद में चाहिए था। ये ग्रिड के नीचे आना ना मसला ही है। लेकिन 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 ग्रिड को बंद किया जाए तो ग्रिड के नीचे कंटेनर डाल नहीं सकता क्या मैं? डाल सकता हूँ ना, ग्रिड के नीचे कंटेनर नहीं डालने दे रहा। ओके 7:32 हो गए हैं, हम ऑल्सो ओके, चलें परफेक्ट, वंडरफुल, गुड टू लिसन यू फ्रॉम यू माई वाइफ। आई हैव टू एंड इट नाउ, और आई हैव टू रन, आई हैव टू डू अ पॉडकास्ट, विश मी लक, एंड फिर इसको दोबारा वेबसाइट पे काम करना है, 2 घंटे उसके ऊपर, और फिर उसके बाद आई हैव टू प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट राइट अवे। चलें, सी यू, टेक केयर, आपसे थोड़ी देर में बात होगी, हाफिज़।
हम्म ओके सो या आई एम ऑल डन। कुछ है किसी को पूछना है तो पूछने को, गिला शिकवा है तो वो बता दें, और मोस्ट ऑफ इट थिंग इज़ डन। मैं ये डिज़ाइन जो है ना लिफ्ट लेग जो अपने पास सेव कर लेता हूँ। इधर यू गो। चले, नो क्वेश्चंस, ऑल सेट, लेट्स लीव नाउ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।